पब्लिक रो जो पैसा दउची पब्लिक थ्रू टैक्सेशन से पैसा देकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे जाउची तो पब्लिक रो पैसा हां कि नहीं पब्लिक रो पैसा बर्तन गवर्नमेंट कहूची भाई मते पैसा दियो मु लोकन पई काम करबी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट रे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलेबी ठीक अछि किछि असुविधा नै किंतु लोकों को पैसा लोकों को पचारि कि नबा को पड़िबो एमिति त न हो कि मन इच्छा पैसा तमे नै जिवो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु गोटे टंकाटे भी जदि तुमको नबार अछि ताहाले कहार परमिशन दरकार देखिया पड़िबो से पैसा उडा कहार से पैसा तो लोक मानकर जदि से पैसा लोक मानकर ताले परमिशन काटो नबा पड़िबो लोक मानकर कोन सब लोकों को मु डायरेक्ट इंडिविजुअली जाई पचारबी कि भाई तुम जो पैसा अछि से पैसा मते टिके दबो मु लोक मानक सेबारे लगेबी पचारि परिबनी ताले काहा को पचारिबा ना लोक माने पठेइथिबा रिप्रेजेंटेटिव को से रिप्रेजेंटेटिव माने किए एमपीज तो एमपीज मानकर मतामत नियाती दरकार दैट्स व्हाई वी कॉल लेजिस्लेचर जतले तांको मत देबे पार्लियामेंट रे कि हां आमे रेडी अछु कि तमे सैंक्शन दिया दैट मींस पब्लिक रेडी अछि कि ठीक अछि गवर्नमेंट को एती पैसा देबे दरकार ताले गवर्नमेंट नबो जोटा कि हमें बजट सेशन में पढिबा जय जगन्नाथ एवरीवन हियर वी गो हमें चलचे नेक्स्ट पार्ट को जहार ना होची वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि होची 9th क्लास रा चैप्टर 4 ओके तो बर्तन हमें कौन जानले फर्स्ट चैप्टर जदी हमें देखिबा कि व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी जोथिरे हमें बुझिले कि डेमोक्रेसी टा कोन एंड तारा पिलर्स एई है ना तो से पिलर्स रे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी थिला हमें कहउतिले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कथा कहउतिले रूल ऑफ लॉ कथा कहउतिले एंड जो इलेक्शन टा हबो से इलेक्शन टा फ्री एंड फेयर हबा दरकार एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी रो भी कांसेप्ट हमें कहउतिले वन वोट इक्वल टू every person has to give only one vote and each vote has equal value ये सब कथा हमें कहते लास्ट क्लास रे भी हमें देखिले कि ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जोटा अछि कि इलेक्टोरल रोल केमती बने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कांसेप्ट कोन ये सब कांसेप्ट हमें ऑलरेडी पढि सारछे देन हमें एबे देखिबा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो गोटे डेमोक्रेसी रे द गवर्नमेंट हैज टू वर्क विथ एंड विदिन द इंस्टीट्यूट व्हिच प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन मेजर डिसीजंस माने पाका डेमोक्रेसी रे हमें कहतले कि द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट नो द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बेले कोन करिवो ना जो गवर्नमेंट अछि ताको लिमिट करिवो तार पावर ताको लिमिट करिवे ए कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें लेखि कि रखिचे कि गवर्नमेंट रो कोन कोन काम गवर्नमेंट कोन करि परिबो नाही सो द गवर्नमेंट हैज टू वर्क विद और विदिन द इंस्टीट्यूशन which play an important role in major decision making which will be taken and implemented in the country in this process we come across three institution केतेटा ना तीनटा ए तीनटा होची भाई पॉलिटी रो बहुत इंपोर्टेंट जिंस ए तीनटा मन रखिबो गोटे होची लेजिस्लेचर गोटे होची एग्जीक्यूटिव आ गोटे जुडिशियरी दीज आर द थ्री इंस्टीट्यूशंस जो तरे कि गवर्नमेंट निजर काम गोडा करि परिबो फॉर गेटिंग ए मेजर डिसीजन गोडा को नबा पई तीनटा इंस्टीट्यूशन गोटे होची लेजिस्लेचर जो माने होचंदी हमें जहा को रिप्रेजेंट करके हम पई पठाऊ वोट देकी जो माने को हमें नेता को किछि जो माने मेजॉरिटी गेन करिवे से माने कोन करिवे गवर्नमेंट फॉर्म करिवे जतले गवर्नमेंट फॉर्म करिवे सेथिरु किछि जण मिनिस्टर भी हेबे जेमति हम कहू जे शिक्षा मंत्री पेट्रोलियम पई मिनिस्ट्री जणे फाइनेंस पई मिनिस्ट्री जणे रेलवे पई मिनिस्ट्री जणे डिफेंस पई मिनिस्ट्री जणे होमवर्क पई सॉरी होम डिपार्टमेंट पई जणे मिनिस्ट्री तो एमिति हमें जदी देखिबा कि जेतले से मिनिस्ट्री गेन करछन या फिर जो हमें कहू जे प्रशासन जोथि पई कि प्रिपरेशन भी पिला करदी ओएस यूपीएससी आईएएस पई करेक्ट नो तो सेथिरे बहुत सारा ब्यूरोक्रेट्स भी बनदी से माने को कोआ गला ना एग्जीक्यूटिव देन आउ गोटे कोन ना जुडिशियरी जो हमें कहू जे कि हां जेल को जिबार अछि किंतु तापर गुरु जज अछंदी जज मोर केस टा को हियरिंग करिवे तो जुडिशियरी गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे काहे कि ना जुडिशियरी जदी न थांता ताहले ई जो लेजिस्लेचर ए माने जतले एग्जीक्यूटिव हेबे एग्जीक्यूटिव से माने कोन करिवे जतले लेजिस्लेचर थ्रू रे ए माने लॉ तयारी करिवे पार्लियामेंट रे जतले लॉ तयारी हबो एंड से माने मन इच्छा लॉ तयारी कर देबे जदी ताले गोटे लोकर साधारण मौलिक अधिकार जो गुडा थिबो से गुडा को भी काटी दबार चांसेस अछि गोटे राजा राजुती भले चांसेस अछि कि सेही भले आसी जाय पारे जोथि पई कि ताकू किए सब बेले चेक करथुवा किए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दउथुवा ना जुडिशियरी काहेकि ना जुडिशियरी इंटरप्रेट करि परिबो कोन करि परिबो इंटरप्रेट करि परिबो सो दीस थ्री इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जेतले काम करिवो तार तीनटा इंस्टीट्यूशन पैरेलली थाए कोन ना गोटे होची लेजिस्लेचर जे होची लॉ मेकिंग करिवो एग्जीक्यूटिव जे लॉ को इंप्लीमेंट करिवो एंड जुडिशियरी जदी किछि डिस्प्यूट हैला ताको सेटलमेंट करिवार कांसेप्ट होची कहार ना जुडिशियरी रो होप इट इज क्लियर टिल नाउ ओके द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया किए डिसीजन नबो ना द मेजर डिसीजन इन्वॉल्व्स मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वेरी इंपोर्टेंट वर्ड ना हेड ऑफ द स्टेट सी पूरा स्टेट रो head then state what is state article 12 कहबो what is state so we will talk about that later
बट प्रेसिडेंट सी होचंदी आमे कहूचे ना कि हम पाखरे रिपब्लिक अछि काहे की रिपब्लिक अछि बिकॉज़ वी हैव ए प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड हेड इट इज नॉट हायरार्की और कि चलो पूर्व थर जी प्रेसिडेंट थिले तांको पिला पिली पुणी आसी गले गोटे हायरार्की लेवल रे आसुनांती से माने इलेक्टेड होचंदी इलेक्टेड ही की जाउचंदी कि इनहेरिटेड नुह इलेक्टेड से माने इलेक्टेड तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री फॉर्मल अथॉरिटी ये ना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर सब तक गवर्नमेंट रो पावर का पाखरे रहउची ना प्राइम मिनिस्टर का पाखरे सी कोन ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही इज आल्सो नोन टू बी रियल हेड कोन ना रियल हेड किए ना प्राइम मिनिस्टर while the president is known to be nominal head on the name of president all the government work has been completed correct no parliament it consists of president and two houses very important parliament consists of president and two houses those two houses are called lok sabha and rajya sabha the prime minister must have the support of a majority of lok sabha member then only he can be chosen as the prime minister or else no कि lok sabha रे जो मेजोरिटी आसे मेजोरिटी अनुसार ही प्राइम मिनिस्टर को चूज कर ठीक अछि ओके नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ताले हमको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काहे दरकार ना हमें जो तीनटा कहले लेजिस्लेचर रहबा दरकार एग्जीक्यूटिव दरकार एंड जुडिशियरी दरकार ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट and political life in the country there are several institutions at work in india कोन ना they will take important decision taken जोटा कि प्राइम मिनिस्टर आ गोटे कैबिनेट मिनिस्ट्री थाए ता विषय में चर्चा करिया इंप्लीमेंटेशन बाय द सिविल सर्वेंट जो माने हमें कहउचे ब्यूरोक्रेट्स दीज आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव्स आल्सो dispute resolved by whom na the supreme court where disputes between the citizen and the government are finally settled negative implications of the institutions and positive implications of the institutions देखिबा ताले ए जो इंस्टीट्यूशन अछदी याकर नेगेटिव implications कोन ना जदी दे इफ someone will try to overlap the power between these two institutions for example executive अछि and executive ऊपर legislature निजर power establish करूची ताले executive properly function भी कर पाइबनी से independently function भी कर पाउनथबो ए है ना जदी जुडिशियरी जे के अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव आ लेजिस्लेचर को चेक करिवो जदी जुडिशियरी भी डिपेंडेंट हे जिवो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऊपर ताले जुडिशियरी आंको पाई फेवर रे काम करिवो ता माने ऑटोक्रेसी पळे आसी जाय पारे so negative institution involves rules and regulations which can be bind the hands of the leaders institution ए जो institution जो माने involve होचंदी rules and regulation this can also bind the hands of the leaders कि लीडर माने जेमिति चाहिबे सेमिति रूल रेगुलेशन बनै परिबे these institutions they involve meetings committees and routines which lead to delay and complication sometimes कि एमिति तो जणे चाहिले जेमिति राजा को टाइम रे राजा जहा कहबे भाई हे गला डन बट एठी कोन हबो एठी गोटे कंसेंसस दरकार कि बहुत सारा लोक थिबे सेमानंकर गोटे कंसेंसस बिल्ड हवा दरकार डिबेट डिस्कशन एंड वोटिंग प्रोसेस हवा दरकार जोटा कि ऑब्वियसली डिले हबो पॉजिटिव इंप्लिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कोन ना गोटे वाइड कंसल्टेशन हवा दरकार कंसेंसस हवा दरकार some of the delays and complication introduced by the institutions are very useful why they provide an opportunity for a wider set of people to be consulted and for any decisions they make it difficult to rush through a bad decisions ठीक अछि कि जेतेबेले इंस्टीट्यूशन बना होची बिकॉज़ गोटे लार्ज नंबर ऑफ पीपल और लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर अछन एथिरे समस्तकर व्यू पॉइंट इंपोर्टेंट एंड अल्टीमेटली डिबेट डिस्कशन भी होची डिबेट भी होची कि एटा काहे की करबा दरकार काहे की करबा कथा नुह ता पर एमाने गोटे फाइनल डिसीजन मेक करूचंदी जोथि बाकी ऑल्दो इट इज डिलेड बट इट इज नॉट हरी भरी वाला कांसेप्ट करेक्ट नो कि हमें एमिति नो कि तरतर हे गोटे डिसीजन नै जाउचे ठीक अछि स्लो जिबा दरकार किंतु प्रॉपर डिसीजन आसी जिबा दरकार देन हमें कहूचे पार्लियामेंट कोन करूची ना इन ऑल डेमोक्रेसीज an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people at the state level this called as legislature or legislative assembly तो state level रे जोठी हमर state legislature अछंदी जो माने को हम कहूचे member of legislative assembly MLAs जो माने को हम कहूचे भाई हम नेता हम MLA करेक्ट तो से माने होचंदी कोठी जाउचंदी ना स्टेट को जाउचंदी किंतु जदि हमें कहबे दिल्ली रे गोटे पार्लियामेंट अछि सेतिर अछि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होंगे नहीं लोकसभा राज्यसभा तो सेठी की हमें जो पठोजे से माने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से माने को करते सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी तांका पाखरे अछि काहे की ना सबटो अधिक सबतक पावर कहा पाखरे थाए ना विथ द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल रे कहूचे ना विथ द पीपल ऑफ इंडिया हम पाखरे ही सब पावर अछि किंतु से पावर को हमें कहा ऊपर वेस्ट करूचे ना हम रिप्रेजेंटेटिव ऊपर वेस्ट करूचे ड्यूरिंग द डे ऑफ पोलिंग
पोलिंग डे रे आमे कोन करूचे हम वोट टा ट्रांसफर करके हम पावर टा को ट्रांसफर करूचे का पाखो ना हम रिप्रेजेंटेटिव पाखो ठीक अछि एनी नीड ऑफ पार्लियामेंट ताले पार्लियामेंट काहे दरकार भाई लॉ तैयारी करियार अछि पार्लियामेंट केमती दरकार नै तब टू मेक लॉज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज they can change existing laws or they can abolish existing laws कौन कर परिबे ना addition करि परिबे variation आनी परिबे और repeal करि परिबे जोटा कि आर्टिकल 368 हमको आगे आगु को जाके पढिबा कौन करि परिबे ना they can add they can change or they can repeal also addition variation and repeal so ई तीन टांग किए करि परिबो ना पार्लियामेंट करि परिबो they can also make new ones in their place to exercise some control over those who run the government कि किए गवर्नमेंट को चलेइबो किए चलेबनी टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द हु रन द गवर्नमेंट को किए रन करिवो किए करिवनी ए विषय रो डिस्कशन कोठी भी हो पार्लियामेंट रे जहार संख्या गरिष्ठता अधिक होबो जहार मेजॉरिटी रहबो सेही माने ही गवर्नमेंट को चलेबे सो इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया and this control is direct and full those who run the government can take decision only so long as they enjoy the support of the parliament what is the support means majority कि maximum जदि हम पाखरे 543 जन अछंदी 543 रु जेतले maximum 50% रु अधारे जदि लोक कहले कि एई पार्टी को हमें चाहूछु हमें एई पार्टी रो जे लीडर ताको हमें प्राइम मिनिस्टर करिया को चाहूछु देन सेही पार्टी बर्तमान रूल तयारी करबो जे पर्यंत ताका पाखरे 50% रु अधिक मेजॉरिटी थिबो टू कंट्रोल मनी ऑफ द गवर्नमेंट इवन गवर्नमेंट रो मनी को किए कंट्रोल करूची टू कंट्रोल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली कोन हो ना गवर्नमेंट को दरकार काम करिया पे गवर्नमेंट कोन करबो ना एग्जीक्यूशन काम ओडा करबो तो गवर्नमेंट जेतले लोकन पई काम करबो सेतले गवर्नमेंट को पैसा दरकार ए पैसा आसीबो कोठू ना ए पैसा आसीबो एगुडा होची लोकन को पैसा हमें पढिबा जेतले इकोनॉमिक्स रो सेक्शन आसीबो जेतले बजट रो सेक्शन आनिबा सेतले हमें देखिबा कि लोकन कर पैसाटा केमिति आसुची थ्रू टैक्सेशंस एंड डिफरेंट वेज एंड से पैसाटा इवन लोकन को पई गवर्नमेंट खर्च करबो किंतु गवर्नमेंट जदि मन इच्छा खर्च करिवो ताले गवर्नमेंट को चेक करिया पई भी किछ संस्था रहया दरकार तो पार्लियामेंट रे बहुत सारा कमिटीज थांती ठीक अछि तो पार्लियामेंट रो काम गोटे होची ए जो पैसाटा गवर्नमेंट खर्च करिया को जाउची ताकू भी पार्लियामेंट द्वारा ही चेक करा जिवो सो इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट दैट्स व्हाट वी कॉल अप्रोप्रिएशन बिल हमको गोटे अप्रोप्रिएशन बिल ने कैसे पड़ियो कोन ना भाई मो पैसा पब्लिक रो पैसा जोटा कि गोटे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अछि पब्लिक रो जो पैसा दउची पब्लिक थ्रू टैक्सेशन से पैसा देके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे जाउची तो पब्लिक रो पैसा हो कि नहीं पब्लिक रो पैसा बर्तन गवर्नमेंट कहूची भाई मते पैसा दियो मु लोकन पई काम करबी डिफरेंट प्रोजेक्ट रे डिफरेंट स्कीम चलेबी ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु लोकन को पैसा लोकन को पचारी कि नबा को पड़िबो एमिति त न हो कि मन इच्छा पैसा तमे नै जिवो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु गोटे टंकाटे भी जदि तुमको नबार अछि ताहाले कहार परमिशन दरकार देखिया पड़ियो से पैसा उडा कहार से पैसा तो लोक मानकर जदि से पैसा लोक मानकर ताले परमिशन काटू नबा पड़ियो लोक मानकर कोन सब लोकन को मु डायरेक्ट इंडिविजुअली जाई पचारबी कि भाई तुम जो पैसा अछि से पैसा मते टिके दबो मु लोक मानक सेबारे लगेबी पचारि परिबेनी ताले काहा को पचारिबा ना लोक माने पठैथिबा रिप्रेजेंटेटिव को से रिप्रेजेंटेटिव माने किए एमपीज तो एमपीज मानकर मतामत नियाती दरकार दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लेजिस्लेचर जेतले तांको मत देबे पार्लियामेंट रे कि हां आमे रेडी अछु कि तमे सैंक्शन दियो दैट मींस पब्लिक रेडी अछि कि ठीक अछि गवर्नमेंट को एती पैसा जरूर दरकार ताले गवर्नमेंट नबो जोटा कि हमें बजट सेशन रे पढिबा ठीक अछि तो सेति पय अगेन कोन दरकार ना अप्रोप्रिएशन बिल दरकार नॉट ए सिंगल मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी टेकन आउट विदाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल अप्रोप्रिएशन बिल जे पर्यंत न आनिछ से पर्यंत टंका डेबी तमे नै परिबो नाही सो टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर डिस्कशंस डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज वी रिक्वायर पार्लियामेंट देयर आर टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट गोटे हाउस होची लोकसभा आ गोटे होची राज्यसभा सिंस पार्लियामेंट प्लेज एन सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी मोस्ट लार्ज कंट्रीज दे आर डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स गोटे होची called chambers of house they are called the chambers of the house गोटे होची upper chamber आ गोटे होची lower chamber ठीक अछि one house is usually directly elected by the people and exercise the real power which is lok sabha पावर कहा पाखरे सब बोले रहबा दरकार लोकन पाखरे ताले लोक जो ठीक पावरफुल हे के चली ताले से हाउस रो सब मैक्सिमम पावर हो दरकार हो कि नहीं तेनु गोटे पावर होची सबटु जे की एक्सरसाइज को रियल पावर सी होची लोक सभा यस नेक्स्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द people while the second house is usually elected indirectly and perform some special functions we will also talk about the कि राज्य सभा स्पेशल फंक्शंस होड़ा कोन कोन सो इन इंडिया पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस गोटा होची काउंसिल ऑफ स्टेट्स
जो थिरे स्टेट्स मानकर रिप्रेजेंटेटिव आस्थिबे ताकू कहा जाउछि राज्यसभा राज्य मानकर रिप्रेजेंटेटिव सो राज्यसभा लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज कॉल्ड लोकसभा सो हाउस ऑफ द पीपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट आमे कोन कहले ना पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सॉरी the parliament consists of president as well as two house correct both lok sabha rajya sabha so president of india is a part of the president although he is not a member of either house se na lok sabha ra member na se rajya sabha ra member but he is or she still considered to be the part of the parliament and all the law made in the houses came into force only after they received the assent of the president ki president jodi ho न करिवे see process कोन होबो ना तमे लोक सभा रे गोटे बिल नै के आसिलो देन राज्यसभा को से लोकसभा रे पास कलो देन राज्यसभा को गला या फिर राज्यसभा रे फर्स्ट बिल टा को इंट्रोड्यूस कलो देन राज्यसभा रे पास करी लोकसभा को आनिलो लोकसभा रे भी पास हे गला लोकसभा रे पास हे गला बोली ता मान जे बिल टा बर्तन एक्ट हे जिवो बिल टा को एक्ट सेति बेले हबो जेति बेले से प्रेसिडेंट करो असेंट पाइबो प्रेसिडेंट करो मंजूरी पाइबो प्रेसिडेंट जदी कहिबे हां मते बिल टा ठीक लागुची ताहाले से बिल टा बर्तन एक्ट हे जिवो एंड सब लोकन को ऊपर लागू होबा स्टार्ट हबो डिफरेंस ऑफ पावर्स बिटवीन टू हाउसेस ताले ए जो दीटा हाउस रहला गोटा होची लोकसभा आ गोटा होची राज्यसभा अंक भीतर डिफरेंस कोन दो राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर चैम्बर राज्यसभा को कोन कहवा जाय अपर चैम्बर लोकसभा को कोन कहवा होची लोअर चैम्बर बट दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग नॉट द लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स राज्यसभा को किसी स्पेशल पावर दिया होची बट रियल पावर का पाखरे अछि लोकसभा का But one of the most matter the Lok Sabha exercise supreme power. Lok Sabha पाखरे supreme power रहिबा निहाती दरकार काहेकि ना the power always belongs to whom? With the people of India. That is defined in the preamble. View of the Lok Sabha prevails. Lok Sabha prevails कोन करछि ना any ordinary law needs to be passed. Any ordinary law has to be passed by both the house. But if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which the member of both houses sit together. Lok Sabha has the larger number of members. The view of Lok Sabha is likely to prevail. कोन ना लोक सभा रो गोटे एमिति पावर कोन लोक सभा रे भाई 545 राज्य सभा 245 250 तो जेतले हमें एठी कहूचे कि लोक सभा रो सबडू अधिक मेंबर तो ऑब्वियसली फर्स्ट लोक सभा रे गोटे बिल आसिला लोक सभा रे जदी से बिल टा पास न होई परला राज्य सभा को सेटा जिबो ही नै किंतु राज्य सभा रे जदी गोटे बिल आसिला बट से बिल पास हैला पर लोकसभा को जेतला आसी लोकसभा रे पास होउनी ताले कोन हबो ना गोटे जॉइंट सेशन हबो कोन हबो जॉइंट सेशन हबो जॉइंट सेशन रे लोकसभा रे लोक भी बसिबे राज्य सभा रे भी एमपीस बसिबे तो एमपीस फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज राज्य सभा दी जण जाक मिसी के बसिबे सेतले स्पीकर जे हेबे से होचंदी लोकसभा रा स्पीकर हेबे तो ए जॉइंट डिसीजन जेतले टेकन हबो सेतिक बेले जेतले वोटिंग हबो सेतले लोकसभा रा अधिक लोक तो लोकसभा जहा चाहूथिबो जनरली सेही ही हबो जदी बिलटा लोकसभा रे पास ही जाईची राज्यसभा को जाईची करेक्ट एंड लोकसभा रे पास ही राज्यसभा मना करछि देन जॉइंट सेशन हबो लोकसभा जेहेतु चाहूथिला कि भाई आमे चाहू जे बिलटा ऑटोमेटिकली पास हो दैट्स व्हाई लोकसभा रो व्यूटा सबले प्रिवेल करे लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स यस जो हमें बजट कथा कहू ना राज्यसभा रो रोल ही नहीं जस्ट खाली से जस्ट डिबेट डिस्कशन करिवे बट ता पई एमिति न कि राज्यसभा रिजेक्ट कर दबो मनी बिलटा को सो once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other the money related bill the Rajya Sabha cannot reject it the Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest some changes in it the Lok Sabha may or may not accept the changes so maximum delay the Rajya Sabha can do is 14 days after 14 days the bill is deemed to be passed कि bill टा automatically pass हो जिवो 14 दिन परे the Lok Sabha controls the council of ministers only a person who enjoys the support of the majority of the members in Lok Sabha is appointed the prime minister कि लोक सभा रे जहार सबटु मैक्सिमम स्ट्रेंथ थिबो जो पार्टी रो सबटु मैक्सिमम मेंबर थिबे मोर देन 50% सेमानकर लीडर जी हेबो सी हे जो तमरो प्राइम मिनिस्टर या फिर गठबंधन जदी जदी एमिति नै कि कोनोसी भी पार्टी रो 50% नै ताले पार्टी मर्ज हेबे गठबंधन हबो गठबंधन हे कि गोटे से माने गवर्नमेंट फॉर्म करिवे तो गवर्नमेंट जेतले फॉर्म करिवे सेथरु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बाहरवे सो इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोक सभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट द राज्य सभा डज नॉट हैव दिस पावर जदी लोक सभा रे जदी प्रूफ हे गला फ्लोर टेस्टिंग गोटे हुए जदी प्रूफ हे गला कि भाई मेजॉरिटी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं कि मैक्सिमम 50% ऊपर को जो पार्टी गोटे से पार्टी जे कहूतला कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करछु जदी आज जणा पडुची कि से पार्टी रे वर्तमान कॉन्फिडेंस नहीं मोर देन 50% लोक नहांती से पार्टी रो ताहाले इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑल द काउंसिल मिनिस्टर हैज टू रिजाइन समस्त को हटिबा को पड़िबो
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोन ना जेते एटा त आमे लेजिस्लेचर कथा कहले एग्जीक्यूटिव कथा कहले जेते executive at different levels of any government there are functionaries who take day to day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people काहेकि लोक मानकर पावर लोक माने निज ट्रस्ट अनुसार निज नेता को देचंदी कोनोसी एग्जीक्यूटिव को देना आती भाई डू यू अंडरस्टैंड तहसीलदार कलेक्टर एमान कोन लोक बाछिचंती एमान कोन लोकंक पई प्रतिनिधि करूचंदी ना लोकंक पाखरे डेमोक्रेसी रे गोटे गणतंत्र रे सबुठ अधिक पावर का पाखरे अछि लोकंक पाखरे एई लोकंक पावर लोक निज पावर टाकू काहा को देचंदी ना निज नेता को देचंदी कोनोसी जगह रे लोक निज पावर तहसीलदार को देई नांती ना ही लोक निज पावर कलेक्टर को देचंदी हां कि नै तेनु एग्जीक्यूटिव ऑल्दो से माने एग्जीक्यूटिव अछंती से माने किछि रूल्स रेगुलेशन रे से माने को इंप्लीमेंट करियार अछि जोथि पय कि रूल्स रेगुलेशन बा इंप्लीमेंट करछंती बोली तांको टिके अधिक पावर अछि but they are not the supreme powerful they are not they do not exercise the supreme power on behalf of the people all those functionaries are collectively known as executive they are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government तो से माने को जाय पब्लिक सर्वेंट को जाय लोकंकर सेवा करिवा पई अछंती से माने they are the executives in democratic there are two categories of make up the executive गोटा होची political executive गोटा होची parliament executive और civil servant the political executive कोन ना they are the elected by the people for a specific period and includes political leaders who take the big decisions political executive like आमे कहूचे जेमति गवर्नमेंट आसी गला आगो लेजिस्लेचर से माने थिले लेजिस्लेचर रु देन से मानकर मेजॉरिटी बहुत हला जेहेतु मेजॉरिटी बहुत हला से माने मिनिस्ट्री तयारी कले मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स रहले प्राइम मिनिस्टर रहले सो दे आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू टेक बिगर डिसीजंस हां नै गोटे होची परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट जो माने होजन पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस 60 वर्ष हां नै परमानेंट दे आर पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट they remain in office even there the ruling party changes these officers work under political executives and assist them in carrying out day to day administration तो आमे जानले दी प्रकार एग्जीक्यूटिव गोटा होची पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ गोटा होची परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 वर्ष पई थिबे जो माने लेजिस्लेचर हे के आसिले नेता हे के आसिले जदी से मानक पाखरे संख्या बहुत रहिला मोर देन हाफ करेक्ट ताले से माने कोन करबे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करबे से गवर्नमेंट से 5 वर्ष जाय चलिबो 5 वर्ष पर पुणी गवर्नमेंट भांगिबो देन अगेन री इलेक्शन हबो अगेन जे मेजॉरिटी रे आसीबो से गवर्नमेंट फॉर्म करिवो से माने जोजंती पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो माने एग्जीक्यूशन करबे लाइक गवर्नमेंट रे जो माने थिबे फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी वर्तमान सेंटर रे रूलिंग पार्टी अछि तो बीजेपी पार्टी रे भाबिनो 300 मेंबर अछंती जो माने लोकसभा रो किंतु ऑल द 300 पीपल आर कॉल्ड टू बी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नो there will be few ministers and prime minister those ministers and the prime minister they are known to be political executive while if you go to permanent executive there are a lot of bureaucrats so all the bureaucrats they are known to be permanent executive civil servant reasons for political executive having more power than the permanent executive in democracy the will of the people is the supreme the minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf answerable to so these ministers they will be answerable to the people for all the consequences of their decision this is the reason the minister take all the final decisions will be taken by whom now will be taken by the ministers only is that clear okay next concept prime minister and council of ministers prime ministers and council of ministers तांकर अपॉइंटमेंट केमिति हबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कोन ठीक अछि तो चलो देखिबा तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जतले हम कहूचे ता माने हमें आसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अंडर को तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रे देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट की अपॉइंट करियो प्राइम मिनिस्टर को ना द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी or the coalition parties that command the majority in the Lok Sabha and prime minister what is this coalition कोन कहली भाबिनी हम पाखरे 100 टा सीट अछि टोटल 100 टा सीट रो 50 सीट रो जो पार्टी अधिक वोट पाई थिबो सेही मानो को ही हमकु मिलिबो कोन ना सेही मानकर जे लीडर थिबो ताको प्रेसिडेंट आसी कहबे भाई तमे ही जाओ प्राइम मिनिस्टर दैट किंतु जदी 50 टा नाही गोटे पार्टी पाखरे 45 टा आ गोटे पाखरे 35 टा 45 35 80 आ गोटे पाखरे 20 टा तो एमाने कोन करिवे भाबिनो 45 वाला 20 सहित मिसिबो ये पार्टी ए ये पार्टी बी ए आ बी मिसी की गवर्नमेंट तयार करि परबे नहले पार्टी सी सी आ बी मिसी की भी गवर्नमेंट तयार करबे तो बी वर्तमान जुआडे जीवो से याडे ही गवर्नमेंट तयार हो एया ना तो वर्तमान बी जदी कहबो कि भाई मु ए सहित मिसी पार्टी तयार करबी ताको कहजिबो कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन वाला सरकार सो इन केस ऑफ
no single party or alliance get a majority, president appoints the person most likely to secure a majority support. जदि कहा पाकर जदि alliance एमिति बनी पारुनी ताले president कोन करिवे से निज अनुसार से गोटे अपॉइंट करि परिवे मोस्ट लाइकली टू जे तांको लागु जे कि गोटे मेजॉरिटी सपोर्ट नै परिवो तांको से प्राइम मिनिस्टर पई घोषणा कर देबे. The prime minister does not have a fixed tenure again. He continues to the power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. जे पर्यंत पार्टी मेजोरिटी अच्छे से पर्यंत से लीडर जे थिबो से प्राइम मिनिस्टर बोली घोषणा करा हेतु किंतु जो दिन मेजोरिटी कमिबो से दिन प्राइम मिनिस्टर बी पद रहिबो नाही. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हला पर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस क्रमे प्रेसिडेंट कोन करिवे अलगा जो मिनिस्टर माने अछंदी तांको भी अपॉइंट करिवे. तो जदी काली क्वेश्चन आसला कि जो मिनिस्टर मानन को अपॉइंट किए करंदी इट इज प्राइम मिनिस्टर or president, the answer is president but on the advice of prime minister. ठीक अछि. The prime minister is free to choose minister as long as they are the member of the parliament. Sometimes a person who is not member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the house of the parliament within 6 months of appoint as the minister. For example, चाहे से प्राइम मिनिस्टर होंतु या फिर मिनिस्टर होंतु जदि भी से हाउस रा मेंबर नहांती मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहांती स्टिल द पर्सन कैन बी कंसीडर्ड टू बी मिनिस्टर बट विदिन 6 मंथ अज्यूमिंग द ऑफिस अज्यूम करिवार 6 मंथ्स भितरे तांको कोन करबा को पड़िबो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हबा को पड़िबो आइदर से लोकसभा होंतु या फिर राज्यसभा रा मेंबर होंतु बट तांको हबा को पड़िबो. इट इज ऑफिशियली नेम ऑफ द बॉडी कोन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर that includes all the minister. It usual 60 to 80% generally 15% रा रूल थाए 60 to 80 ministers रहंदी of a different rank. Cabinet ministers are usually the top leader of the ruling party or the parties who are in charge with the major ministries. Usually the cabinet minister जो माने से माने होचन बहुत माने very close to the prime minister. The cabinet minister meet to take the decision in the name of council of minister. Cabinet is the inner ring of the council of minister. We'll discuss the ring. Ministry of State with independent charge are usually in charge of smaller ministry. Ministry of State with independent charge. They participate in cabinet meetings only when specially invited. And कोटा होची Ministry of State are attached to and required to assist the cabinet ministry. तो हमें कौन जानले कि भाई गोटे रहउचंदी तो प्राइम मिनिस्टर को घेरी की रहउची कोन ना कैबिनेट दैट इज द इनर रिंग. तो इनर रिंग होची कैबिनेट मिनिस्ट्री. कोन सी गोटे मेजर डिसीजन देखिबो तमे कि प्राइम मिनिस्टर जेतले बसतुवे देन फाइनेंस मिनिस्टर बसतुवे रेलवे मिनिस्टर बसतुवे डिफेंस मिनिस्टर बसतुवे होम मिनिस्टर बसतुवे ए जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर करेक्ट नो यस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तो से माने बसुथिबे तो सेही माने जो डिस्कशन नेबे दैट इज कॉल्ड कैबिनेट. तो सब टाइम रे तो सब मिनिस्टर माने को डाका हे परियो 80 जण मिनिस्टर को डाकी कि सब डिसीजन नै परियो कि ना नॉट पॉसिबल. तो 10 जण 15 जण बसी कि गोटे डिसीजन नै हबो दैट इज कैबिनेट मिनिस्ट्री. से कैबिनेट मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिया पे को माने अछन ना ता आउटर रिंग रे अछन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज. व्हाट दे विल डू दे विल अगेन असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो माने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बाहर से मान रहउचंदी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ओनली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गोटे ता पूर्व थिला मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे नै एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट से माने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री को हेल्प करिवे. दिस इज द रिंग. नेक्स्ट parliamentary democracy is often known as a cabinet form of government. कोना ना cabinet form of government. Since it is not practical for all the ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. Cabinet meeting रे decision ओडा निया जाय. The cabinet work as a team. Cabinet कोन करे गोटे टीम भलिया काम करे. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up every decision of the cabinet. No minister can openly criticize any decision of the government even if it is about another ministry or department. तो से मानो को if they have to swim together or they have to drive into the water together. तो बेसिकली कैबिनेट रो जो डिसीजन नि हबो समस्त को मंजूरी हवा निहाती दरकार समस्त गोटे एक सहमति रे चालुथिबे. कैबिनेट सेक्रेटरीएट कोन ना every ministry has secretaries like the IAS officers, civil servant. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions in a ministry नबा किंतु ताको जो इन्फॉर्मेशन दरकार गुड जने मिनिस्टर को जो इन्फॉर्मेशन दरकार से इन्फॉर्मेशन के प्रोवाइड करिवे ना तांको सेक्रेटरीज प्रोवाइड करिवे. से सेक्रेटरीज माने को माने आईएएस ऑफिसर्स और सम ब्यूरोक्रेट्स. The cabinet as a team is assisted by cabinet secretariat. These include many senior civil servants who try to coordinate the work of different ministries. Then power of the prime minister. Prime minister को power कौन ताले
The real constitution does not say much about the powers of the prime minister or the minister as their relationship with each other. But as the head of the government, the prime minister has wide-ranging powers such as constitution बेसी कथा तो प्राइम मिनिस्टर को कथा कुहा होनी constitution नहीं बेसी प्रेसिडेंट का पाई अछि बट जदि देखिबो प्राइम मिनिस्टर बिकॉज़ ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट मिनिस्ट्री रो जो मीटिंग टा किए चेयर करबो ना प्राइम मिनिस्टर करिवे he will coordinate the work of different departments. His decisions are also final in case of disagreement arises between the department मझिरे बाबिने गोटे रेलवे डिपार्टमेंट अछि गोटे कॉमर्स डिपार्टमेंट अछि आंका भितरे डिस्प्यूट अछि ताले फाइनल डिसीजन किए नेबे प्राइम मिनिस्टर नेबे he exercise general supervision of all different ministries. All ministries work under his leadership only. All ministers. The prime minister distributes or redistributes work to ministers. He also has the power to dismiss the ministers. Minister को dismiss करिया ପାଇଁ भी prime minister पाखरे power अछि. When the prime minister quits, the entire ministry quits. Very important कि prime minister जदि resignation दे देले भाई entire council of ministry is gone. So the power of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as a prime ministerial form of government. कौन ना prime minister form of government कि पार्लियामेंट रे बर्तन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जोटी जोटी चलछि सेठी प्राइम मिनिस्टर रो ए जो काम गुडा एते गुरुत्व हो जाई एते बहुत सारा काम एते मेजर पावर गुडा तांका पाखर अछि सेंटर्ड हे कि तो जोटा कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी समटाइम्स नोन एज प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस नेक्स्ट होज द टॉपिक इज द प्रेसिडेंट. ताले प्रेसिडेंट को कथा ठीक देखिता ताले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट with exercise only nominal powers but he is considered to be the nominal head of the state. कौन nominal head. The president of India is like the queen of Britain whose functions are to a large extent ceremonial functions. को type of functions ceremonial function. कहा को appointment करेगा कहा को हटे दबा ए सब काम गुडा कहार ना प्रेसिडेंट रो काम मोस्टली अपॉइंटमेंट वाला सेरेमनी टाइप रो काम. The president supervise the overall functioning of all the political institution चाहे से legislature हो executive हो और judiciary हो political institution को overall functioning को से supervise करने in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. Election of the president कौन ना the president is not elected directly by the people. The elected member of the MPs or the elected member of the legislative assembly जो मानव को लोक को माने बाची जाने most important की elected member of parliament and elected member of MLAs elect them. A candidate standing for president post has to get majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that prime minister can. This ensures that he remains only as a nominal executive. कौन आमे जानले कि आमे तो डायरेक्ट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर रो जेमती इलेक्शन हुए कि प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तो पर हेबे आगो तो से नॉट नोमिनेट इलेक्टेड हे कि जाइथिबे एज ए लेजिस्लेचर. फर्स्ट तो से लेजिस्लेचर हेतिबे ना लोक मानको सहमति द्वारा लेजिस्लेचर हेतिबे तो जेमिति से लेजिस्लेचर हे कि जाउचंती ता पर जदी संख्या बहुत तांको पार्टी रो मिलुची ताले से लीडर बोली कोआ जाउची एंड से प्राइम मिनिस्टर होउचनी. किंतु जदी हमें प्रेसिडेंट को कथा देखिबा प्रेसिडेंट इज elected by the representatives not by directly the people. Power of president देखो तो constitution already mention अछि all government activities take place in the name of the president. गवर्नमेंट रो कोनोसी भी काम कहार नारे चले प्रेसिडेंट रो नारे चले. all laws major policy decisions of the government are issued in her name. कहा नारे ना जेतिकी भी लॉ अछि मेजर पॉलिसी जहा अछि ए सब डिसीजंस गवर्नमेंट रो कहा नारे चले ना प्रेसिडेंट रे चले. प्रेसिडेंट सिग्नेचर न कले कौन सी बिल लॉ एक्ट हे परिबने. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर मानकर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इंटरनेशनल ट्रीटीज गुडा भी कहा नारे चले प्रेसिडेंट को नारे. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन इंडिया. डिफेंस फोर्स जहां अछि तार सुप्रीम कमांडर के प्रेसिडेंट. ही एक्सरसाइज all these powers only on the advice of the council of minister. ता ए जो पावर गोडा तमे देखुछ ए पावर कोन से इंडिपेंडेंटली नियंती कि ना से कहा द्वारा नियंती ना ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन प्रेसिडेंट कोन करंदी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर से माने गोटे एडवाइस देबे प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को जदी लागिला कि नाही मते एटा ठीक लागुनी आ मु चाहूची कि एटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर सेमान आउथर टिके देखंतु कैबिनेट मिनिस्ट्री सेमान आउथर टिके विचार मुक्त करंतु तो से पुनी रिटर्न कर दे पारती थरिए ही रिटर्न कर परियो बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन जदी से एडवाइस आउथर प्रेसिडेंट को मिलबा प्रेसिडेंट हैज बाउंड टू एक्ट अपॉन इट सिमिलरली जदी गोटे बिल पास होला बाय पार्लियामेंट then it will become law only after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to sign it. Appointment of the prime minister के करते ना president ही करते भाई. When a party or coalition party secures a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoy the majority in the Lok Sabha. When no party जतले कोनोसी भी पार्टी और कोलिशन मेजॉरिटी रखुनी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशनरी पावर माने से तांको इच्छा रे तांको जहा को लागेबो कि मु जदी आंको चूज करबी ये तांकर मेजॉरिटी शो करि परिबे करेक्ट नो तो से तांको कोन करबे प्राइम मिनिस्टर बोले डिक्लेयर कर दे परिबे द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव द मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम कि जहा को भी से कहबे कि भाई तमे प्राइम मिनिस्टर हो जाओ देन गोटे फ्लोर टेस्ट भी होबा ताकि नेक्स्ट डेट रे गोटे स्पेसिफिक टाइम भीतर प्रोटेस्ट होला परे से तांगर मेजॉरिटी शो करिवे यस द लास्ट वन इज रिलेटेड टू व्हाट ना द जुडिशियरी आमे कोन देखिले आमे फास्ट देखिले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आमे लेजिस्लेचर को अथा भी देखिले कि जो माने जाउचन एमपीज वगैरह है कि इलेक्शन होची कोठी ना लोकसभा राज्यसभा देन आमे कहले कि अच्छा देयर विल बी एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव अंडर ए प्रेसिडेंट देन आमे कहले कि प्राइम मिनिस्टर देन एबेटी के आमे डिस्कशन करबा जुडिशियरी तो व्हाट इज जुडिशियरी ऑल द कोर्ट्स at the different levels in a country put together are called to be judiciary जति की भी कोर्ट अछि जोठी पूरा कंट्री रो जोठी डिफरेंट लेवल रे ताकू कोन कहौ जे जुडिशियरी द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द entire nation for the entire nation there is only one court that is called supreme court again high courts in every states mostly there can be one high court for two or more states also yes for example Andaman Nicobar and जदि तमे देखिबो कि कोलकाता west bengal they have only one high court but there are different benches that is called regional benches so district courts and the courts at local level रे भी बहुत सारा कोर्ट थांदे integrated judiciary hierarchy कि हमर जो judiciary अछि that has to be independent and integrated independent means it has to be independent from executive and legislatures तांकोठु ये independent हबा दरकार at the same time ये इंटीग्रेटेड भी हबा दरकार कोन ना सुप्रीम लेवल रे हमर एटा गोटे हायरार्की गोटे टॉप लेवल रे जेतले ऊपर को जीवा सेठी रहबो सुप्रीम कोर्ट ता तळ को हाई कोर्ट स्टेट लेवल रे देन डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल India has an integrated judiciary supreme court controls the judicial administration in the country its decisions are binding on all the courts of the country so when we call it as integrated तो कोनोसी डिसीजन जदी सुप्रीम कोर्ट नेला जोटा कि हमें कहूचे अपेक्स कोर्ट यार डिसीजंस इवन लोअर कोर्ट वाला को भी बाइंडिंग ठीक अछि jurisdiction of supreme court it can take up any disputes between citizen or country supreme court ताले कोन डिसीजन नै परिबो ना जदी किछि भी डिस्प्यूट हैला between the citizen or country between citizen or government citizen सहित country रो हो citizen सहित government रो or between two or more state government हो or between the governments of union and state level कि state भीतर डिस्प्यूट हैला या फिर citizen और state भीतर डिस्प्यूट हैला जोड़ा कि तार फंडामेंटल राइट रिलेटेड वायोलेशन हैला फंडामेंटल राइट हमको आगु पढिबा मौलिक अधिकार रो जदी ऊपर वायोलेशन हैला ताले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली से केस उडाको नै परिबा दैट इज द जुरिस्डिक्शन इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस सिविल और क्रिमिनल केसेस रो जदी अपील करी गलो ताले सबटो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट किउडा सुप्रीम कोर्ट इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स आल्सो हाई कोर्ट रो डिसीजन अगेंस्ट रे भी अपील सुनी पारिबो नेक्स्ट हमें कोन कहले जुडिशियरी इंडिपेंडेंस होबा दरकार not under the control of legislature or executive जदी तांको कंट्रोल रे रहला तो मैक्सिमम केसेस तमे देखिबो सिटीजन वर्सेस स्टेट स्टेट रे को माने आसे जानि ना एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर आर्टिकल 12 कहूची से ता विषय ताने मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस फॉर एग्जांपल XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा तो स्टेट ऑफ ओडिशा दैट स्टेट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव अगेन दैट मींस मैक्सिमम चांसेस रे एपटे गोटे सिटीजन रहला अलगु एपट साइड रे गोटे एग्जीक्यूटिव रहउची नाउ आंकर फैसला क्या करिवो ना जुडिशियरी करिवो बर्तन जदी जुडिशियरी इज डिपेंडेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव इफ जुडिशियरी इज डिपेंडेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव देन जुडिशियरी विल गिव द जजमेंट इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव तो से स्टेट फेवर रे जज द जजमेंट दबा ताले लोक को तो न्याय मिली लागी नहीं मु कोन कहली ना ए आउ बी वर्सेस बी जदी ए होची सिटीजन बी होची स्टेट
एंड आक डिसीजन किए नब ना जुडिशियरी बर्तमान जदि जुडिशियरी ही तमर होची इन फेवर ऑफ स्टेट और इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव जदि जुडिशियरी को तुम इंडिपेंडेंट रखिन जुडिशियरी को जदि तुम डिपेंडेंसी करके रखिछ का ऊपर ना स्टेट ऊपर एग्जीक्यूटिव ऊपर ताले जुडिशियरी का फेवर रे जजमेंट दबो स्टेट फेवर रे दैट मींस एग्जीक्यूटिव फेवर रे ताले ए लोक को जजमेंट कोठी मिलिला ए लोक को न्याय कोठी मिलिला ता न्याय मिलिला ही नहीं जोथि पई कि ए वर्सेस बी रे जते बेले गोटे जुडिशियरी इंटरफेयर करूची टू गिव द जजमेंट दिस जुडिशियरी हैज टू बी independent from executive as well as legislature बुझियला कि नहीं yes so the judge do not act on the direction of the government neither according to the wishes of the party in power less interference by the political executive through less interference रहा दरकार so the judges of the supreme court and the high courts are appointed by the president on advice of the prime minister and in consultation with chief justice of supreme court एमिति नो कि केवल प्राइम मिनिस्टर कथा द्वारा ही ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे आसियो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूवल ऑफ जजेस इज वेरी डिफिकल्ट काहेकि ना जदि मते इंडिपेंडेंसी रखिबार अछि ताहले ए जो रिमूवल रो प्रोसेस टा को मते बहुत स्ट्रांग करियार अछि काहेकि ना जदि मु रिमूवल टा को स्ट्रांग न कली ताहले कोन हबो आज जज अछि जदि मु गोटे पॉलिटिकल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट मु किछि गोटे डिसीजन देली ताले से माने कोन करियो मते लागी कि हटाई देबे ए भाई आकु हटाई दियो जल्दी होंगे नहीं तेनु ए रिमूवल टा बहुत स्ट्रांग हबा दरकार ताकि जजमेंट टा प्रॉपर समस्त को न्याय मिलि पारतो इवन जदि रूलिंग गवर्नमेंट जदि ऑटोक्रेसी वाला बिहेव करियो लागियो मोनार्कियल वाला कांसेप्ट को बिहेव करियो लागियो ताहाले भी जज ताकू उचित शास्ति दे पात तो once a person is appointed as the judge supreme court or high court it is nearly impossible to remove him or her from that position a judge can be removed only by an impeachment motion passed by separately by 2/3 members of both the houses two houses of the parliament it has never happened in the history of indian democracy आज पर्यंत सेमती हे ही नाही power of judiciary कोन supreme court and high court have the power to interpret the constitution they can declare invalid any law of the legislature or action of the executive whether at the union level or state level if they find such law is against the constitution जदि constitution against रे कोनोसी law आसिला जो law टा की लागिला कि ये लोकंकर मौलिक अधिकार छिनी नवा पई आछि या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करूछि कोनोसी भी लॉ जोटा कि लेजिस्लेचर माने बनेले जदि से लॉटा अनकॉन्स्टिट्यूशनली भलिया साउंड होउछि देन सेटा कोन करि परिबो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे कैन टेक दैट लॉ आउट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them जदि कोनोसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर लेजिस्लेचर एक्शन को चैलेंज करा गला होंगे नहीं जदि चैलेंज करा गला ताले कोठी चैलेंज करबो तमे जुडिशियरी के पाखरे चैलेंज करबो जदि जुडिशियरी पाखरे चैलेंज करबो जुडिशियरी चेक करबो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अछि ना नहीं जदि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड न हो ताले जुडिशियरी अगेन को करबो से जो लॉ या फिर एक्शन को स्ट्राइक डाउन करबो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो ruled that the core of the basic principle of the constitution cannot be changed this is what we call केशवानंद भारती केस जोटा कि आगु को पढ़िबा एबे तो एनसीईआरटी रे हम कवर करछे धीरे धीरे आरो हायर वर्जन को हमें जिबा तब केशवानंद भारती केस सेतिरे बेसिक प्रिंसिपल बीएसडी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन रो कांसेप्ट सुप्रीम कोर्ट एटा कहितला द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियरी दैट अलाउज इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यस डेफिनेटली हमें पढ़िबा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थरे कि इन डिटेल हमें पढ़िबा फंडामेंटल राइट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जोटा कि हमें एससीबीसी कहूचे इट इज अनदर नेम फॉर ऑल द पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसीडर्ड टू बी बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली द पर्सन हु बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस वेर एलिजिबल फॉर द कोटा ऑफ 27% फॉर द जॉब्स मंडल कमिशन बनिथिला जोटा कि ओबीसी एससीबीसी पे कांसेप्ट थिला ओबीसी बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन इन 1979 headed by BP Mandal hence it was popularly called as Mandal Commission it was asked to determine the criteria to identify who will consider to be social educational backward classes of India the commission gave its report in 1980 and made many recommendations one of these recommendations was 27% of the government job has to be reserved for the social and educationally backward classes. The order to give 27% of reservation was challenged in the court. This case was known as Indira Swani versus others and others versus Union of India case. By majority, the 11-member bench of the Supreme Court in 1992 declared that
This order is valid, but it said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. तो हमें तले reservation करवा ताको in detail हमें टिके देखिबा, but still ये जो reservation रो concept रे हमें कहले कि इंदिरा स्वानी केस रसला there is a concept of creamy and non-creamy layer. तो there are criteria for the person to be considered to be creamy. किसी other backward classes रे तो आसुची. For example, I am OBC, but if my parents are earning more than 8 lakh, if my parents are earning more than 8 lakh, then I should not be considered to get any reservations. But still, I will be considered to be other backward classes, but in creamy layer. The presidential system gonna, now when the president is both the head of the state as well as the head of the government. For example, the president of the United States of America, who is directly elected by the people and personally choose and appoints all minister, he is considered to be the that system is considered to be presidential system. जो कि president ही सब कुछ सर्वे सर्वा सब ही president. ठीक है जी. So with this we could able to complete the 4th chapter and the questions will be available in the parikshasabha.com. Please go on and solve the MCQs. Thank you everyone.